जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। Regulation of gene expression, ये basically it's a combination of two words. Regulation means control and gene expression means synthesis of gene product. It could be either the protein or it could be either the messenger RNA. So regulation of gene expression means that when this product should be prepared and when this product should not be prepared. कब ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, कब ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, इसको बोलते हैं बेसिकली कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म, कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ द जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द जीन रेगुलेशन। पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन मींस के नेचुरली कोई जीन स्विच ऑफ हो और रेगुलेटरी मैकेनिज्म उसको स्विच ऑन कर दे। सच काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। वाइल नेगेटिव रेगुलेशन मींस के व्हेन नेचुरली जीन जो है वो स्विच ऑन हो और रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसको ऑफ कर दे। प्रोकैरियोट में इसकी एग्जांपल लैक ओपेरॉन की और ट्रिपोपेरॉन की है, जो कि बहुत ही सिंपल मॉडल है for the purpose of explaining the gene regulation in case of prokaryote. Operon basically एक सेट ऑफ जीन्स को बोलते हैं जो सिंगल प्रोमोटर से एक्सप्रेस होता है। Operon means the set of genes that are expressed from a single promoter. Or as a result of this transcription of the operon, polycistronic messenger RNA or polycistronic RNA is being produced. Means के वो जो सिंगल RNA प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट सिंगल RNA रिप्रेजेंट मोर देन वन जीन। सो लैक ओपेरॉन ओपेरॉन दो किस्म के होते हैं, को कैटाबॉलिक ओपेरॉन बोलते हैं और को एनाबॉलिक ओपेरॉन बोलते हैं। कैटाबॉलिक ओपेरॉन मींस कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द ओपेरॉन it is going to degrade or it is going to break down certain metabolite. So such a kind of operon is called catabolic operon और लैक ओपेरॉन इसकी एग्जांपल है। लैक ओपेरॉन के जीन प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली इसमें जो बीटा लैक्टोसाइडेज एंजाइम है दैट एक्चुअली ब्रेक डाउन द लैक्टोज शुगर। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है और जो कि बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ द बीटा 1,4 लिंकेज ऑफ द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस बॉन्ड को ब्रेकआउट करता है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज दो मोनोसैकेराइड के यूनिट्स बन जाते हैं इससे। तो चूँकि लैक ओपेरॉन के का जो प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है एक डाइसैकेराइड शुगर को, एक मेटाबोलाइट को। दैट्स व्हाई लैक ओपेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबोलाइट और कैटाबॉलिक ओपेरॉन। Structurally, lac operon consists of obviously a single promoter and three structural genes, and in between the promoter and the structural genes is present a regulatory region operator, and also there is present quite distance apart another regulatory gene which is regarded as lac-I gene. Lac-I basically एक repressor protein को transcribe करता है, एक repressor protein को सिंथेसाइज करता है, इसको लैक रिप्रेसर बोलते हैं। ऑपरेटर चूँकि जीन की विसिनिटी में प्रेजेंट होता है और जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, दैट्स व्हाई ऑपरेटर इज रिगार्डेड एज द सिस रेगुलेटरी एलिमेंट। और लैक आई का जीन काफ़ी डिस्टेंस अपार्ट प्रेजेंट होता है फ्रॉम द लैक ओपेरॉन, बट स्टिल इट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक जीन, सो दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट। स्ट्रक्चरल जीन, जो थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स लैक ओपेरॉन में होते हैं, उनमें लैक जी, लैक वाई और लैक ए होते हैं और ये इसी ऑर्डर से ही पड़े होते हैं। लैक जी का प्रोडक्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक वाई परमिएज एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज करके लैक्टोज की इनटेक फ्रॉम द मीडियम टू द सेल को इन्हेंस करता है। और लैक ए बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को सिंथेसाइज करता है। इसका फंक्शन बाज़ बुक्स में नॉट रिपोर्टेड है और बाज़ बुक्स में है कि ये डिटॉक्सीफाई करता है उन सब्सटेंसेस को जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द लैक्टोज शुगर मीडियम से सेल के अंदर आते हैं। नॉर्मली
जो नेगेटिव रेगुलेशन है इस लैक ओपेरॉन में दो किस्म की रेगुलेशन होती है, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन मीन्स के नेचुरली इन लैक्टोज की प्रेजेंस में दोनों मैकेनिज्म लैक्टोज की प्रेजेंस में रेगुलेट होते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन हो या पॉजिटिव रेगुलेशन हो। लैक्टोज की प्रेजेंस में एक्चुअली ये जीन स्विच ऑन हो जाता है। अब नेचुरली लैक्टोज की प्रेजेंस में जीन स्विच ऑन होता है, लेकिन जो ही लैक्टोज मीडियम से रिप्लेनिश हो जाता है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो कि लैक आई का प्रोडक्ट है, इट बिकम एक्टिवेट एंड इट बाइंड ओवर द ऑपरेटर सीक्वेंस। तो जब ये ऑपरेटर सीक्वेंस में बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो नेचुरली जीन लैक्टोज की प्रेजेंस में स्विच ऑन होता है और ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी जो रेप्रेसर प्रोटीन है ये जीन को स्विच ऑफ कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रेगुलेशन। तो इसका जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ये है कि अगर लैक्टोज मीडियम में ना हो तो लॉजिकली इस जीन को स्विच ऑफ ही रहना चाहिए। स्विच ऑफ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये कैटाबॉलिक ओपेरॉन है, इसका काम है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना। तो अगर लैक्टोज मीडियम में मौजूद ही नहीं है, देयर इज नो लैक्टोज इन द मीडियम, सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट दिस जीन शुड बी एक्सप्रेस्ड, इसको नहीं एक्सप्रेस होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस रिप्रेसर प्रोटीन इज एक्टिव, और जब ये एक्टिव होती है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज सो इट बाइंड्स ओवर द ऑपरेटर सीक्वेंस एंड इट प्रोड्यूसेस द हिंड्रेंस फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चर जीन, सो हेंस द जीन इज स्विच्ड ऑफ। लेकिन जब जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आ जाता है सो दैट लैक्टोज बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड मेक इट इनएक्टिव। तो जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द लैक्टोज, और ये बेसिकली लैक्टोज का एक स्टीरियो स्ट्रक्चर होता है जो बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ, सो इट मेक्स इट इनएक्टिव एंड व्हेन इट बिकम इनएक्टिव इट डिटैच फ्रॉम द ऑपरेटर सीक्वेंस। सो व्हेन डिटैच फ्रॉम द ऑपरेटर सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज फाइंड इट्स वे ओपन, और जब इसको एक ओपन वे मिलता है तो इट ट्रांसक्राइब द लैग जी, लैग वाई, लैग ए जी, एंड इन दैट सिचुएशन द लैग ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है ऑफ द नेगेटिव रेगुलेशन। स्टिल अब सेकंड सिचुएशन ये है जो पॉजिटिव रेगुलेशन की है, नेचुरली लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट हो लेकिन स्टिल जीन जो है वो स्विच ऑफ रहता है। रीज़न उसका ये है कि अगर मीडियम में लैक्टोज भी हो और ग्लूकोज भी हो तो उस सिचुएशन में लैक्टोज के होते हुए भी जीन स्विच ऑफ होता है, लेकिन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसको स्विच ऑन करता है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। और इस पॉजिटिव रेगुलेशन में व्हाट हैपेंस बेसिकली कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन की वजह से साइक्लिक ईएमपी का लेवल डाउन होता है, और डाउन होने की वजह से जो कैप प्रोटीन कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन जिसकी बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज यानी प्रोमोटर से जस्ट अपस्ट्रीम होती है, उसको कैप साइट बोलते हैं, इस पे ये कैप प्रोटीन बाइंड करती है, और ये उस वक्त बाइंड करती है व्हेन दिस कैप प्रोटीन इज एक्टिव। और एक कैप प्रोटीन तब एक्टिव होती है व्हेन साइक्लिक एएमपी इज बाउंड विद द कैप। सो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन में चूंकि साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन होता है, सो दैट्स व्हाई there is no cyclic AMP bound with the cap protein, और cap protein is inactive। तो जब cap protein inactive हो तो cap साइट पे बाइंड नहीं कर सकते और RNA polymerase को a sort of push नहीं मिलता for the start of the transcription। So in that situation the lac operon is switched off even in the presence of the lactose। लेकिन जो ग्लूकोज रिप्लेनिश होता जाता है साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो हाई होता जाता है, और जब साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई हो जाता है तो इट बाइंड विद द कैप प्रोटीन कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। सो व्हेन इट बाइंड विद द कैप प्रोटीन बिकम एक्टिव, तो जब एक्टिव हो जाती है इट बाइंड विद द कैप साइट एंड इट प्रोवाइड अ पुश टू द आरएनए पॉलीमरेज। और चूँकि ऑलरेडी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टोज बाउंड होता है तो वो ऑलरेडी डिटैच होता है फ्रॉम द ऑपरेटर बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिव। सो इन दैट सिचुएशन activated cap protein that bind with the cap site, it provide a push to the RNA polymerase and hence it transcribe the lac operon. So if we summarize the story of the lac operon structure consists of such that promoter, it consists of promoter site, 3 structural genes. In between the promoter and the structure gene is spread of the operator sequence.
Upstream, the promoter sequence is present the cap site, and even more upstream than the cap site is present the LAC-I gene. LAC-I gene produces the repressor protein. That's and as its gene is present quite distance apart from the LAC operon, that's why we call it as the transregulatory element. Or as operator is present within the gene, in the vicinity of the gene, and it regulates the expression of the gene, so that's why we call it as the cis regulatory element. और थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स लाइक जी का प्रोडक्ट बीटा लैक्टोसाइडेज जो एक्चुअली ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक वाई के जीन का प्रोडक्ट परमिएज है जो ग्लूकोज की अपटेक में हेल्प करता है फ्रॉम मीडियम टू द सेल, और लाइक ए डिटॉक्सीफाई करता है उन सब्सटेंसेस को जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम टू द सेल। और दूसरी तरफ कैप प्रोटीन बेसिकली बाइंड विद द कैप साइट, एंड it only bind with the cap site when it is active, and it become active only when it bind with the cyclic AMP, और cyclic AMP तब bind करता है when the medium lacks glucose,